Okay, we good to go? Yes, sir. Okay, first of all, for those of you who don't know me, my name is Nathan McCullough, and I am a gold director with USANA Health Sciences in the global business. I am Deep's brother-in-law and been with USANA for uh, probably 13, 14 years. I don't know the exact time. But I've also been in business for the last 30 years. So I've been in all kinds of different businesses. I've run wellness centers. I've run this USANA business for the last 15 years. I started a painting company when I was 16, 17 years old. So I've been an entrepreneur my whole life. And one of the things that I love more than anything else is sales. सो नेथन ये कह रहे हैं कि जो इनका बैकग्राउंड है, लाइक इन्होंने बिजनेस ही किया है और इन्हें कम से कम 30 साल हो गए हैं बिजनेस में। एंड इनको युसाना में तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। एंड इन्होंने अपना क्या कहने, युसाना से पहले भी इनके हेल्थ क्लिनिक का बिजनेस था। सो जो सेल्स है वो इन्हें, सेल्स का जो काम है बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। सो इन्होंने लिटरली अपना जो बिजनेस में है, पूरी उम्र इन्होंने बिजनेस में ही काम किया है। ये इनका पैशन है। How does this? So we'll start here actually. So when I was right out of high school, I started a company called Student Painters. It was actually a network marketing company at that time. I didn't know what network marketing was actually, but I bought a big white van and I put ladders on top and I filled the inside with painting gear and we sold almost $100,000 in painting jobs in one summer just by literally walking around and just knocking door to door, introducing myself and sharing with people that I could see what was going on in their house. And that was my first real experience with sales was literally just cold approaching total strangers and telling them that their house needed painting. सो इनका जो पहला काम था बिजनेस का, ये हाई स्कूल में थे तब इन्होंने किया था। पेंटिंग कंपनी इन्होंने लॉन्च की थी। पेंटिंग कंपनी में इनकी टीम थी, और एक समर विच इज अबाउट जो 3 महीने की गर्मी का टाइम होता है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उसमें इन्होंने 1 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया था सिर्फ एक समर में, थ्रू पेंटिंग जॉब्स। और वो डोर टू डोर जाके सेल्स कर रहे थे, नॉक करके लोगों को कह रहे थे कि आपकी घर को पेंटिंग की जरूरत है, पेंटिंग करवा लो। And when you go door to door, for those of you who haven't done it, you experience a lot of rejection. सो अगर आप डोर टू डोर आपने नहीं किया है काम, अगर आप करोगे, आपको एक्सपीरियंस करके पता चलेगा कि बहुत ज्यादा रिजेक्शन है डोर टू डोर में। But that's when I learned one of the number one skills in sales is that no doesn't mean anything, right? Sometimes it means not now, sometimes it means no, not ever, but it doesn't mean anything about me and it doesn't mean anything in particular. So I just learned to be unstoppable by the word no. सो इनका जो फर्स्ट बिजनेस था, उस बिजनेस में इन्होंने ये सीखा कि एक्चुअल में जब लोग नो बोलते हैं उसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता। उसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें काम नहीं करना। बट उस एक बिजनेस ने इन्हें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस दे दिया कि अब नो अगर कोई कह रहा है, वो चीज उन्हें कभी रोकेगी नहीं बिजनेस को बढ़ाने में। So a little while after, I went to college for a while. I did the whole education thing, but I realized that really business and entrepreneurship is what I love doing. And so actually when I moved to New Zealand, I met Deep and Simmer there. I had started my first franchise when I was like 28, I think, 27, 28 years old, and started it with
just kind of an idea. And you can see here, it was very rough. We just kind of had we had some medical equipment, but these little beds that massage your back. And we had an idea for wellness franchise, and we just jumped in and decided to try to make it work. तो इन्होंने कुछ देर के लिए कॉलेज में भी पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई ख़त्म की, पर इनको पता चला पढ़ाई करने के बाद कि मुझे बिजनेस में ही जाना है। तो इन्होंने न्यूजीलैंड जब मूव हुए, 27-28 ईयर्स की इनकी उम्र थी, इन्होंने फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू किया मेगन हेल्थ क्लिनिक का। एंड आप देख सकते हो फोटो में कि ये बहुत ही लाइक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इनका ऐसे था क्लिनिक। यहाँ पर मसाज बेड्स थे, जहाँ पर लाइक जो हीटिंग बेड्स होते हैं कि हीलिंग में हेल्प करते हैं। सो इन्होंने ऐसे शुरू किया न्यूजीलैंड में अपना काम। एंड देन एक क्लिनिक से इन्होंने 7 क्लिनिक बनाए। या। So and we'll talk about this as we go on, but at this period in time, I was just really excited. You know, I was excited to be a business owner. It was something brand new and it wasn't making any money at that time. But I was excited, and I sold at that time. We started with one tiny little shop, and then we created 8 new franchisees in the matter of 3 years, just through pure excitement and sharing the vision of what we wanted to create. We brought on other business partners that were willing to buy into the franchise. सो जब इन्होंने ये फ्रेंचाइज मेगन का जब बिजनेस शुरू किया, इन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। शुरू में कुछ पैसे भी नहीं बन रहे थे, पर एक्साइटमेंट इतनी थी कि और भी बिजनेस पार्टनर्स को इन्होंने लाइक ढूंढा एंड उन्होंने भी ज्वाइन किया, सो दैट ये उनकी वो बिजनेस पार्टनर्स जो इनकी फ्रेंचाइज खरीद सके। पर शुरू शुरू में काफ़ी देर स्ट्रगल था, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। एंड सो या, सो वहाँ से इनकी शुरू हुई थी जर्नी। And that's actually in New Zealand is when we got introduced to USANA by Bill and Jenny, number one income earners in the world. And we helped grow in New Zealand, and then we went to Indonesia, and obviously now we're growing in India. But this was me at the international convention speaking on stage, probably 3, 4 years ago, right before the launch of India, actually. Um, but you know, USANA has been such an amazing opportunity for me as well, and part of my entrepreneurial journey, and really where I learned the art of public speaking and sales from the front of the room. सो यूसाना के बारे में भी इन्हें न्यूजीलैंड में पता चला जब इन्होंने बिल एंड जेनी जो हैं टॉप इनकम अर्नर यूसाना में, उनके लाइक लिटरली घर में हमने साइन अप किया था यूसाना के बिजनेस के लिए। सो यूसाना से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला, पब्लिक स्पीकिंग सीखने को मिली। एंड इन्हें यूसाना कन्वेंशन स्टेज पर भी बोलने का मौका मिला, राइट बिफोर लाइक जब इंडिया का लॉन्च हुआ उससे पहले ये स्टेज पर थे यूसाना के ग्लोबल स्टेज पर। एंड सो या, यूसाना से एक तो इन्होंने क्या कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग, एंड दूसरा आगे कमरे के आगे से सेल्स कैसे करनी है उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। And then obviously in the last, I've been involved in real estate as well, buying and selling and investing in real estate. It's something I love doing, and been in the $1 million club many times in the last couple of years. See, I can't even spell, I can't even spell the word million, million. But you don't need to spell in order to be able to make $1 million in sales. You just have to learn these key skills. सो जो इनका रियल एस्टेट का काम है उसमें भी ये $1 मिलियन क्लब के मेंबर रहे हैं काफ़ी टाइम, पिछले 2 सालों में। एंड सो लिटरली द मेन थिंग इज कि जो हमारी जो सेल्स है वो सेल्स के बारे में हमें आना चाहिए कि कैसे हमने सेल्स करनी है, and हम अपने आप को जितना भी चाहें ग्रो कर सकते हैं। Yeah. Sales is the number one skill. Of all skills that a human being can learn, it's the highest paid skill, and it doesn't matter what your religion is, it doesn't matter what your educational background is, it doesn't matter about any of that stuff. That's why I love network marketing, and it's why I love sales, because it doesn't care what your history is. All it cares about is how you can communicate, and can you share a vision for the future.
जो सेल्स है वो नंबर वन स्किल है। सबसे पहले ये चीज़ है, आप जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लें। इट डजेंट मैटर कि आपका कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, हिस्ट्री क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। बट सेल्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको मास्टर कर लें, लिटरली आप जीरो से शुरू होके टॉप उसमें नंबर्स में, जैसे मिलियन डॉलर क्लब है उसमें आ सकते हैं। Okay, so we're going to get into the 7 tips to master the art of closing, specifically in network marketing. And I will tell you, when I got into network marketing, I learned from Simon Chan, I learned from Raman Chen, I learned from the best of the best in the network marketing industry. And the thing I love more than anything else is sitting with a person, presenting, sharing a vision about the future, and having them choose this as an opportunity to be their vehicle to help them create what they want. It really is an amazing experience to be able to show someone a path to create their future. सो अब हम करेंगे ट्रेनिंग 7 टिप्स की, जो कि है टू हाउ टू मास्टर क्लोजिंग नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ये चीज़ इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि किसी के साथ बैठ के उन्हें प्रेजेंट करें, उन्हें विजन बताएं कि क्या फ्यूचर हो सकता है, स्पेशली अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर रहे हैं अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। Okay, let's get into it. I'll tell you this. I think that network marketing is the greatest industry in the world to teach you the art of sales. So today we're going to talk about closing. Next month, so we'll try to do this like every month. We'll do a sales series. Next month we'll do objection handling. But if you can learn how to really sell in a way that's inspiring, it's the number one skill that you can learn. And that's why I think network marketing is the best industry because it teaches these skills. आज हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, बट अगले महीने का जो सेशन होगा उसमें हम हैंडलिंग ऑब्जेक्शन या कोई भी एक सेल्स स्किल की ट्रेनिंग करेंगे। बट द की आइडिया है कि ये जो ट्रेनिंग है हम इसको अप्लाई करें एंड एक्चुअल में, लाइक जो हमारी जो ग्रोथ है वो ट्रेनिंग से ही होती है। सो एवरी मंथ हम एक एक सेशन करेंगे। Okay, so the reason why I wanted to start with closing, even though it's later in the sales process, is because that's the moment where everything transforms. Someone can either be guided by their fear and choose not to take the path, and they miss out on a huge opportunity, or they choose to say yes and they can create a future for themselves. But it really is, as Tony Robbins says, that in that moment of decision, you can create a destiny. And so that's why I think closing is really important because we, as people that are presenting the idea to them, we have to be not pushy, but we have to be firm and we have to guide them to make a decision. जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग जो स्किल है, इट्स अबाउट कि आप इसको हम आज क्यों कवर कर रहे हैं, इवन दो हमारे जो स्किल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में वो बाद में क्लोजिंग आती है। बट क्लोजिंग एक ऐसा स्किल है कि अगर हमें ये अच्छे से आ जाए तो हम लिटरली किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ठीक तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी को, वो लिटरली वहाँ पर डिसीजन बना सकते हैं बिना फियर के कि हाँ, लेट्स टेक अ चांस, हम चांस ले सकते हैं। या हम अपनी कई लोग फियर में आके नहीं लेते। सो दिस इज द स्किल जिसकी वजह से एक्चुअल में हमारी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसीलिए हम आज इस स्किल को कवर कर रहे हैं। So here, I want everybody to remember this, okay? Closing, even though it's very important, it's not about convincing people to do something. If you are in a conversation with someone and you're at the closing moment and you feel like you're there's resistance, you're pushing, you're trying to convince them, then it's still your idea that you're trying to get them to take your idea.
And closing is very natural, it's very fluid, it's very easy when it is their idea, right? You're not trying to convince them. When you feel that resistance, it's still your idea that you're trying to push on to someone, right? Closing, you want to have it be a process that's coming from them to you. You're just guiding them. It's not you trying to push them into a direction. Because if you try to push someone in a direction, right? Think about it. If you try to push against a wall or against a hand, it always pushes back, right? So you don't ever want to get yourself in a situation where someone's pushing back. That means that you're trying to convince them. सो जो क्लोजिंग है वो एक्चुअल में हम किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हैं, हम किसी को पुश नहीं कर रहे हैं कुछ खरीदने के लिए। एक्चुअल में ये जो हमारे कस्टमर हैं या प्रोस्पेक्ट है, उन्हें लगना चाहिए कि ये उनका आइडिया है। अगर ये उनका आइडिया हुआ, अगर उनको विजन दिखा, ड्रीम दिखा, तो वो खुद ही ज्वाइन करेंगे। पर अगर हम पुश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उन्हें भी ये लगेगा कि नहीं, ये अभी ठीक टाइम नहीं है, राइट? तो वो रेजिस्टेंस जो है, जब भी हमें लगता है कि रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें किसी प्रोस्पेक्ट से, किसी कस्टमर से, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम, वो हमारा आइडिया है, उनका आइडिया नहीं है। अगर उनका आइडिया होगा तो वो खुद ही ज्वाइन कर लेंगे, राइट? So that's why it's about questions and not about statements, right? If I come up to you and I say, "Hey, VJ, this is going to be good for you," right? The first thing that you're going to do is feel like, well, maybe, maybe not, I don't know, maybe push back or whatever. But if I say, "Hey, do you think USANA is going to be a good option for you?" Right? If you say yes, it's now your idea. If I say this is going to be good for you, it's my idea. And that's where you get the resistance. So asking the right questions is really the key. अगर हम राइट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो यही होगा कि उन्हें लगेगा कि उनका आइडिया कि वो यूसाना ज्वाइन करें। बट अगर हम किसी को ये बोले कि नहीं नहीं, तुम ज्वाइन करो, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी टीम बनेगी, बहुत अच्छा बिजनेस बनेगा, तो फिर भी ये आपका आइडिया है एंड शायद आपका प्रोस्पेक्ट बोले कि नहीं, मुझे नहीं अभी करना। Okay, so this is a kind of a roadmap, right? So we're going to go over why confidence is critical, why closing is not just at the end, right? The pre-close process, and that we're going to be talking about selling the belief, the closing process, why stories are critical, exact questions that you can ask people, and then we'll end with some proven scripts that you can use during the closing process. हम ये 7 स्टेप कवर करेंगे आज क्लोजिंग की, जो क्लोजिंग की प्रोसेस है, क्लोजिंग का जो रोड मैप है। फर्स्ट कि कॉन्फिडेंस के साथ कैसे क्लोज करना है एंड प्री क्लोज क्या होता है। क्लोजिंग पर ही हम, पूरी प्रेजेंटेशन के बाद ही सिर्फ क्लोजिंग नहीं होता, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भी क्लोजिंग होता है, तो वो कैसे होता है। देन बिलीफ को कैसे सेल करना है। देन जो क्लोजिंग प्रोसेस है वो क्या है। स्टोरीज कैसे यूज़ करनी है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो उस चीज़ को देख के सोचे कि ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है। एंड देन एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन पूछने हैं जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, एंड प्रूवन स्क्रिप्ट्स कौन सी हैं कि आप ये स्क्रिप्ट्स को अगर स्टडी करके पूछोगे, एक्चुअल में आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। And actually, Deep, we can convert this into any language. So part of the homework will be we'll give you this presentation. You go and lead this training to your team in whatever language that you need. That way, you can begin to instill these concepts deeper. हम आपको ये जो प्रेजेंटेशन है देंगे, आप इसको किसी भी हम लैंग्वेज में एक्चुअली ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम आपको ट्रांसलेट करने के लिए भी हम आपको ये दे देंगे प्रेजेंटेशन। आप जाके अपनी टीम्स को भी लीड कीजिए एंड जस्ट स्टडी इट। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कम बैक एंड आस्क। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन पूछते हैं उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हमने हमने कौन सा स्टेप लेना है। We have AI that can translate into any language. हम आपको, अगर आपको मराठी में चाहिए या हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में चाहिए, हम ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। हाँ जी शशांक सर, हम आपको भेज देंगे ये प्रेजेंटेशन। So this is the number one thing, okay? And that is the confidence that you have.
Okay. This is probably the area where people struggle the most, and it's the most important part. Okay. Because for most people, they think I can only sell something if I have already gotten results in this area. And the reality is, this is an illusion. When you're talking to people, they don't care. They don't even know whether you've been successful in the industry or not. They don't know what's in your bank account. They don't know what your checks look like. They don't know about the trips that you have been on or the trips that you haven't been on. That is all of that is in your head. So if you feel like I'm not qualified, I'm not making enough money, I don't have the right rank, all of that stuff, that's in your head. That's not over there with them. So before you do a presentation, before you meet people, you have to wipe all of those limiting beliefs away and believe in yourself and lead and speak with vision and confidence, because that's what people, before they even listen to your words, they feel your energy, they feel your vibration, they feel your confidence. So you have to make sure that you're not worried about trying to prove something to someone, that you're confident in what you're saying. सो लिटरली जो हमारा फर्स्ट टिप है वो ये है कि क्लोज कैसे करना है कॉन्फिडेंस के साथ। सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कॉन्फिडेंस शो करता है जब हम किसी से भी बात करते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट से। एंड ये किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर हमारे पास रिजल्ट नहीं है, हम नहीं बता सकते, हम नहीं दिखा सकते कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं या ये बिजनेस अच्छा है। बट एक्चुअल में किसी को नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में जो आपका बिलीफ है वो मैटर करता है। बाकी चीज़ें कि मेरा तो अभी बिजनेस नहीं बढ़ा है, या मैंने अभी ये रिजल्ट नहीं पाया, या मेरा ये ठीक नहीं है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, वो सारे बिलीव्स की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। एंड जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, इंथ्यूजियाज्म लो हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है, तो अपने आप आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते। अगर आपका कॉन्फिडेंस लाइक रहेगा अच्छे अच्छे से, एंड आपका बिलीफ जो है वो स्ट्रांग है, तो अपने आप आपको वो रिजल्ट मिलेगा। So there's a saying, right? It says ignorance on fire is better than knowledge on ice. And what that means is, what matters is not what you know. What matters is how excited you are, how fired up you are. Okay? I'll tell you guys a story. When I first started in USANA, we had an office in it was called Ellerslie in New Zealand. And they allowed me to go up and lead the presentation from the front of the room in the beginning. And the reality was, I didn't know anything. I was just excited and happy to be leading the presentation. So before I clicked the button to see what was on the next slide, I didn't know what was on the slide. I was just excited to be in front of the room, to be presenting, and I was having fun. And because of that, I was able to, inspire people, get people to join the business. But the reality was, I didn't know about all the science. I didn't know about Dr. Wentz's story. I didn't know about all that stuff. So you don't have to know everything to be effective in sharing a vision. जब यूसाना का बिजनेस नेथन ने शुरू किया था, ऑफ कोर्स इन्होंने तब इनके कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं थे, एक्सपीरियंस भी नहीं था, इवन की प्रेजेंटेशन भी नहीं आती थी अच्छे से करनी। पर यूसाना ऑफिस में इन्हें बोला गया कि आप जाके प्रेजेंटेशन करो, और इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे प्रेजेंटेशन करने के लिए कि लिटरली जाके इन्होंने बोला कि हाँ मैं करता हूँ, और एक्साइटमेंट में पूरी प्रेजेंटेशन लीड की। लोगों ने भी बिजनेस ज्वाइन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट की वजह से, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म की वजह से। उसके लिए इन्हें ये ज़रूरी नहीं था कि सब कुछ आता हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये था कि एनर्जी कितनी है, एक्साइटमेंट कितनी है, और एक्साइटमेंट एंड एनर्जी की वजह से इनका बिजनेस जल्दी बढ़ना शुरू हो गया। Yeah, and on the other side, I mean, we've had some people who know everything about this company, but they've been with it so long, it's become so like matter of fact, and they're so uninspiring. It doesn't matter how much they know. People are not gonna follow them because they're not excited. कई लोग जो हैं बिजनेस में, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग का ही बिजनेस, बहुत साल हो गए हैं बिजनेस में, एक्साइटमेंट नहीं है, एनर्जी नहीं है।
सो फिर जब वो बिजनेस इवन बढ़ाने जाते हैं तो उनके वैसे रिजल्ट्स भी नहीं आते, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि यार कैसे एक्साइटिंग नहीं लगता, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, राइट? So here are the three rules to closing. Okay, so just remember this. One, have high energy, right? Be excited. Have you ever seen the Filipinos? One of the reasons why the Filipinos are so successful in this business is because they're just excited all the time, right? So be excited. Number two, silence. When you're asking people questions, sometimes you ask them a tough question. When would you like to start making money? If you feel uncomfortable by their silence, you sense they're being uncomfortable, and then you jump in and start talking, you miss the opportunity. Okay. So whenever you ask a question, the first person to answer loses. So you don't want that person to be you. And rule number three is don't talk so much. Say less, but be excited. 3 रूल क्लोजिंग के, स्पेशली टू क्लोज विद कॉन्फिडेंस, ये है। सबसे पहले हैव हाई एनर्जी। आपकी एनर्जी एक्साइटिंग होनी चाहिए, हाई एनर्जी होनी चाहिए, सो दैट जब आप कुछ बोल भी रहे हैं लोगों को लग रहा है कि वाह, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है जो ये पर्सन शेयर कर रहा है। सेकंड, साइलेंस विंस। उसका ये मतलब है, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा क्लोजिंग का कि आप शुरू करना चाहोगे ये बिजनेस, जैसे आपने पूछ लिया, उसके बाद चुप। उसके बाद आपने कुछ नहीं बोलना, दूसरे पर्सन को शेयर करने दो। क्योंकि बेसिकली इसको ऐसे गेम से लेके चलो कि जिस जिस पर्सन ने सबसे पहले बोला, दैट पर्सन इज गोइंग टू लूज। सो जस्ट इट्स ओके। एंड तीसरा है कि लेस इंफॉर्मेशन, की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है हमें। मोर कन्विक्शन के साथ बोलने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की ज़रूरत है कि हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें सब कुछ, हर एक प्रोस्पेक्ट को सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है बिजनेस के बारे में। Now, this one is where a lot of people get messed up in USANA because USANA, the truth is, the science behind USANA is actually insane. It's incredible. Our products are so effective and the science is so impressive. If you look at the science of intelligence, and I've been with USANA for 15 years, I still don't understand all this stuff. It is very scientific and it's very impressive. But if you try to explain to people about all the science and all of the products and what's in it and all that stuff, people will just get lost, right? As soon as people start thinking about information, their logical brain kicks in and their emotional brain turns off. So you don't want to be talking about facts and all of these things. You want to talk about benefits, what's in it for them. As soon as you start talking about information, people's brains get overwhelmed, they go into logical mode, and they just switch off. जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी शुरू करते हो लोगों को, लाइक लिटरली उनका जो लॉजिकल ब्रेन है वो ऑन हो जाता है, वो एनालाइज करना शुरू कर देते हैं उस इंफॉर्मेशन को। उस चीज़ के बारे में बोलते हैं, फिर हम रिसर्च करते हैं, हम और देखेंगे लाइक कि प्रोडक्ट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, फिर वो ऐसी चीज़ें बोलनी शुरू कर देते हैं। बट अगर आप इंफॉर्मेशन कम करोगे तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। उसकी वजह से क्या है कि आपका जो, आप कॉन्फिडेंस से कम इंफॉर्मेशन से बात करोगे, सो जो प्रोस्पेक्ट है उसको लगता है कि ओके, हम डिसीजन मेक कर सकते हैं। बट जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाती है। एंड उसकी वजह से जो प्रोस्पेक्ट है वो बोलता है कि मुझे ना अभी रिसर्च करने दो, मुझे देखने दो, देखते हैं, सोचते हैं। That those facts are important, but it's part of the training process. It's not part of the closing process. Okay, so the second thing is that let's talk about the pre-close. So closing is not something that happens at the end of a presentation. It's actually a whole process. क्लोजिंग, जो प्री क्लोज की बात करते हैं, जो टिप टू टू है हमारी ट्रेनिंग की, वो सिर्फ एंड में नहीं होती, वो पूरी प्रेजेंटेशन में हम क्लोज करते हैं। So
As a matter of fact, it starts on your social media. It starts with what you put out into the world. It starts with that, right? So people are going to look at that stuff before they go to the presentation, before they meet you. They see your online persona, or they see the way that you're dressed, how you portray yourself. All of that is part of the pre-closing process, right? It might not be something that people even think about, but they're making these assessments. जो क्लोजिंग का प्रोसेस है वो पहले से शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपका सोशल मीडिया है, अगर आप किसी के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हो, सबसे पहले वो जाके आपका सोशल मीडिया देखेंगे और उसी वहाँ ही से वो डिटरमिन करना शुरू कर देते हैं कि आपको ट्रस्ट करें या ट्रस्ट ना करें, इनफ ट्रस्ट करें बाय करने के लिए या ना करें। क्योंकि वहाँ पर आप हर रोज़ दिखा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसी आदतें हैं आपकी, कैसे इंटरेस्ट हैं। तो अगर ये उनके साथ मैच करेंगे तो अपने आप उन्हें इंटरेस्ट बनेगा। अगर नहीं मैच करेंगे उन्हें लगेगा कि नहीं छोड़ो, कुछ क्लियर नहीं है। राइट, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपकी क्लैरिटी जो इमेज है वो क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या सेल कर रहे हो, क्या सर्विस दे रहे हो, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लाइक वो क्लियर होना चाहिए पहले से। Because a lot of people in your life right now, they're watching you even if you don't know it. They may not join now, they may not join tomorrow. But if you're consistent over the time and they can see you out and they can see you on social media, they can see you working in the long hours, that this is actually all part of the closing process. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी आपको अगर ज्वाइन भी नहीं किया उन्होंने आपको, तब भी वो आपको देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपका सोशल मीडिया, वो देख रहे हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। सूनर और लेटर दे विल रीच आउट टू यू, वो आपको ज़रूर पूछेंगे। बट इसीलिए जो आपकी क्रेडिबिलिटी है उसके लिए आपका जो सोशल मीडिया है वो क्लियर होना चाहिए। So this is something that you can work with deep on, and Simmer's also very good at this as well, right? So just make sure that your social media is aligned with the type of person that people will trust, right? बट So you got to make sure. Go ahead, Deep. आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो भी प्री क्लोज में काम करता है, क्योंकि आपका सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है उसको देख के लोग बोलेंगे कि ओके मैं ट्रस्ट करूं इस पर्सन को या ना करूं। इसीलिए आपका जो हेडिंग है कि आप क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, सोच कैसे है आपकी, उसमें आप छोटी सी एक कोटेशन भी डाल सकते हो जो आपका प्रोफाइल है, अगर आपने अभी अभी शुरू किया है। एंड देन उसके बाद जो आपकी पिक्चर्स है उससे पता चलता है कि ओके अगर कोई आपके पेज पे जा रहा है वो क्या क्या सोचते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ को चेक करना है हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। So these are the three questions. This is very important, okay? So take a screenshot, write this down, whatever. These are the three questions that people have in the back of their mind, whether they're never going to ask you these questions, but they're the questions that are in the background. And you have to answer these questions for people, whether they ask it or not. Okay? So just know they're always asking themselves, does this work or is this real? Can I do this? And will you help me? सो लिटरली जब भी कोई ज्वाइन ज्वाइन करता है सो ये तीन क्वेश्चन है वो जो खुद को पूछ ही रहे हैं। क्योंकि जब मैंने भी ज्वाइन किया था सबसे पहले यही क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में, मैंने बोला नहीं था कि मेरे को ये क्वेश्चंस हैं। शायद आपको भी ये एक्सपीरियंस रहा होगा जब आपने ज्वाइन किया कि क्या ये एक्चुअल में लेजिट बिजनेस है या नहीं। ये सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था। दूसरा कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी तो टीचिंग का काम था, मेरे को बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मेरे लिए कि कैन आई डू दिस। एंड तीसरा कि मेरी हेल्प कौन करेगा अकेले कैसे कर लेंगे, राइट। सो ये जो तीन क्वेश्चन है ये हर प्रोस्पेक्ट के दिमाग में होते हैं। सो हमें जो है प्रेजेंटेशन में ये बिलीफ बनाना है कि यस ये चीज़ इज पॉसिबल। तो जिसने मेरे साथ प्रेजेंटेशन की, एक्चुअली हमें बिजनेस के बारे में मुझे एंड मेरी सिस्टर सिमर को नेथन ने ही बताया था। सो यू कैन इमेजिन कि विल यू हेल्प मी वाला तो पहले ही आंसर हो गया था कि यस हो जाएगा।
बट द थिंग इज कि क्या कैन आई डू दिस, सो उसका भी मुझे प्रेजेंटेशन में ही जवाब मिला था। तो ये जो तीन क्वेश्चन है ये हर प्रोस्पेक्ट ये सोचता ही सोचता है नए बिजनेस को शुरू करने से पहले। Yeah, so many people when they're in network marketing, they focus on this part, right? Is the company legit? The thing is, people know USANA's legit, right? But so you spend all of your time trying to convince people the company's legit, but what they're worried about is, can I do this? Right? So you don't want to show up like, look at me, so impressive that people think, well, that's great for you, but I can't do that. Or that's good. It works for people like you, but not for people like me. Right? So you got to know that this is people's biggest concern. Can I do this? And will you help me? Right? So you have to be able to convey to people without saying it that anybody can succeed in this business and that you love working with people, that you can help them. You're going to be there to answer their questions. You're going to be there when the times get tough. Like these are the things that people want to hear, whether they know it or not. तो जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं हम ज़्यादातर फर्स्ट क्वेश्चन पर ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं विच इज़ कि कंपनी लेजिट है या नहीं है। सो हम जो सेकंड क्वेश्चन है वो ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर हम प्रोस्पेक्ट को ये दिखा दें कि वो ये कर सकते हैं उनका बिलीफ बन जाएगा और वो ज्वाइन करने के लिए इजीली वो हो जाएंगे। उन्हें पता चलना चाहिए कि रोड मैप क्या है, कि मैं कैसे इसमें फिट आऊँ आपका जो बिजनेस है, राइट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि देन दे कैन मेक अ ओपन डिसीजन। And by the way, for all the people that are on this call, I bet you're also still dealing with this, right? So if you're doing a presentation for someone and you're not convinced that you can do this, it's going to be very hard for you to transfer the belief that they can do it if you haven't yet believed that you can do it. Okay, so I'm inviting all of you to just take on that it doesn't matter what the past has been. You can do this business, right? It's very important that that part is settled for you, that you can do this. सो ये ज़रूरी है कि हम भी आंसर खुद के लिए कर पाएँ कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन ज्वाइन करता है उसके लिए ये क्वेश्चन ज़रूरी है एंड हमारे लिए भी ये क्वेश्चन ज़रूरी है। तो काफ़ी लोग जो इस कॉल में हैं उन्हें भी लगता होगा कि क्या हम ये कर सकते हैं, वो लेवल अचीव कर सकते हैं। सो हमारा बिलीफ इस चीज़ में स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। Deep, you getting all the whatever is going on in the chat because I can't see it. या Okay. So when it comes to can I do this? Okay, this is a limiting belief that people have in themselves. It's the number one limiting belief. Okay. So part of the ways that you can help them believe that they can do it, even if they're having trouble believing in themselves in that moment, is to help them understand that they're not alone, right? That we have very simple systems that they can tap into, that we have leverage tools, meaning they can work with that will do presentations with them. They can do three-way calls with their upline. We can do small events in hotels or whatever in their local area. That support is going to be there from the upline team and from the company. That we have these tools that we can use. That they don't need to have everything. सो हम उन्हें ये जो बिलीफ है इसको बिल्ड करने के लिए बता सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कवर करना कि हमारा सिस्टम क्या है। सो सिंपल सिस्टम जिसको हम डुप्लीकेट कर पाएँ, जो उन्हें पता चले कि एक्चुअल में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है, ये इजी है। सेकंड जो टूल्स हैं कि हम एक्चुअली में उनके साथ प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, छोटे इवेंट्स कर सकते हैं, बड़े इवेंट्स कर सकते हैं। कंपनी की सपोर्ट है, कंपनी की भी ट्रेनिंग्स हैं, खुद की भी ट्रेनिंग्स हैं, टीम ट्रेनिंग्स। सो दे एक्चुअली नो कि ओके ये सारा कुछ अवेलेबल होगा मेरे लिए जब मैंने ज्वाइन किया। देन ऑफ कोर्स सोशल प्रूफ जो है कि और लोगों की जो शेयर्स हैं, स्टोरीज हैं, वो शेयर करना, जिससे कि उन्हें पता चले कि एक्चुअल में लुक इन्होंने भी किया है, सो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
By the way, this is part of the reason why the health check machine that we have is so effective. Is yes, it's great at selling products. There's no doubt about that. But it's also a great business tool as well because it shows people that it's a very easy duplicatable system, that they don't need to be a doctor. They don't need to know everything about nutrition. They actually have a little machine that can help them grow their business, right? So it's like having a little health professional that they can carry around with them everywhere. So we have AI and we have the health machine. Those two things are tools that you can see here that they can leverage that are simple to help them grow the business. So that little health check machine is not just good at selling products, even though it's amazing at selling products. It's also something that people feel like, oh, I can do that. तो हमारे पास जो हेल्थ टेक मशीन है वो भी इसी चीज़ में के लिए जैसे टूल की तरह एक इजी प्रोसेस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो प्रोस्पेक्ट है या बिजनेस बिल्डर है उसे लगता है कि एक्चुअल में ये करके आई कैन हैव न्यू कस्टमर्स। उसकी वजह से मैं एक्चुअल में अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूँ या सकती हूँ, विच इज़ इजी प्रोसेस। सो उसकी जो हेल्थ चेक मशीन है उसको भी टूल की तरह ही हम यूज़ करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। Okay, the network marketing has a very short selling cycle. Okay, so this is something that's very important to realize, and why being able to tap into the emotional part is very important because you have someone with you in that moment, and the moment is red hot. If they go away, it gets cold very quickly, right? You could do a presentation to someone, and if they don't make a decision in that moment, by the time they get to the car, they could call their friend and ask them, "Hey, what do you think about X?" And all that positive emotion, all of that excitement can just disappear very quickly. Like तो जो when it comes to, go ahead, Deep. जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो उसका जो सेलिंग साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है, वो छोटा है। उसकी वजह से ये ज़रूरी है कि हम अर्जेंसी क्रिएट करें एंड लोगों को एक्साइटमेंट के साथ, इमोशन के साथ स्ट्रेट अवे जब हमने प्रेजेंटेशन की है तभी ज्वाइन करवाएं। क्योंकि उससे क्या है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग साइकिल है, ये नहीं, अगर किसी ने बोला कि मैं सोच के बताता हूँ, बहुत 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 कम चांस है कि वो वापस आके ज्वाइन करेंगे। सो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं एक्चुअल में जल्दी उन्हें कन्वर्ट करें। Yeah, in real estate, it could take you 2 years to close a deal with someone because they have a lot of other things in that are involved in the process. But with network marketing, you often have one chance. जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग साइकिल होता है किसी चीज़ को सेल करने का, जैसे कि घर को, जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसमें कई लोग महीने लगा देते हैं घर खरीदने के लिए, कई साल भी लगा देते हैं क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसको देखना पड़ता है। मीडियम साइकिल है जैसे अगर कोई कार्स वगैरह बेच रहा है, रेंटल ले रहा है, कोई जगह रेंट करनी है। बट जो नेटवर्क मार्केटिंग का साइकिल है वो बहुत बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ये ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट सेलिंग साइकिल है मतलब साथ के साथ क्लोज। सो एंड उसकी वजह से लोग जो क्लोज करते हैं वो भी साथ के साथ कर लेते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए डिसाइड करने के लिए। So this is the golden rule. Never end a presentation without some type of sale, right? They either join the team or they buy a product, but they must buy something. सो गोल्डन रूल ये है कि अगर आपने प्रेजेंटेशन की है, कभी भी प्रेजेंटेशन ख़त्म ना करें विदाउट क्रिएटिंग कुछ अर्जेंसी की वो सम टाइप ऑफ सेल, जिसकी वजह से लोग कोई प्रोडक्ट खरीदें या टीम ज्वाइन करें ही करें, पर कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर खरीदना पड़ेगा। So, all right, now let's go through the actual steps, right? So you want to be test closing throughout the whole process, right? So is if you're going through the process with someone, you got to ask for the sale. I- This may sound funny, but the number one reason why people don't get sales is because they don't ask for them. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो क्लोजिंग प्रोसेस है, द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें आस्क करना पड़ेगा सेल के लिए।
एंड द थिंग इज कि हमें ये थ्रू आउट प्रेजेंटेशन बार बार ये चीज़ पूछनी पड़ेगी, तो हमें पता चले कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है। So the one of the things that I learned years ago with Eric Worre, who's also a great network marketing trainer, is he said you never ask people what they think after the presentation. And I realized that I was always asking people. I would do a whole presentation, and then at the end of the presentation, I would say, "Okay, what do you think?" And then they would go into all of the things that they were thinking about how the product looked or how the music was in the presentation or their impression about this thing or whatever. And people would just open up and they would just go on all kinds of directions. So don't ask people, okay, now that we've shared all this information, what do you think? डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज़ है कि हम कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। बिकॉज अगर हम प्रेजेंटेशन करने के बाद ये पूछेंगे आपको क्या लगता है, वो और ही टेंजेंट पे प्रोस्पेक्ट चले जाते हैं, कुछ और ही बताना शुरू कर देते हैं। एंड उसकी वजह से ये एक क्वेश्चन है जो आप कभी भी नहीं पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। Never ask that question. I can say, for example, Rajesh, do you see that USANA could make a difference for you and your family? He says, yes. I say, okay, great. Let's get you started. It's very simple. सो हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ऐसे पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल राजेश सर, आपको लगता है कि यूसाना के साथ आपकी एंड आपकी फैमिली की जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो अच्छा हो सकता है। सो उसका आंसर यस है या नो है, राइट। पर हम ये नहीं पूछेंगे राजेश सर आपको क्या लगता है। It might sound funny, but do you see that USANA could make a difference for you? Or do you see that the USANA opportunity could help you make a lot of money for your family? Yes. Okay, let's get you started. Let me ask you a question, Rajesh. Do you want to make a little bit of money or do you want to make a lot of money? Right? These तो are very good questions. हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजेश सर आपको क्या लगता है यूसाना के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकता है, आप क्या आपको लगता है कि यूसाना के साथ आपकी इनकम बेटर हो सकती है, या क्या आपको लगता है कि यूसाना के साथ आपकी जो हेल्थ है वो बेटर हो सकती है। सो हम ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अम, जिससे कि जो प्रोस्पेक्ट है वो आंसर करेगा, वो बताएगा, एंड जितना ज़्यादा वो बताएंगे उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उनके ज्वाइन करने की। So we'll go over this next time on the a lot of the objection handling, but this is really the sales process. I ask you, let's get you started. And then you're either going to say yes or there's a little hesitation, right? If someone hesitates, you can ask, "Hey, you clearly see that this is a great opportunity, but I'm experiencing a little hesitation. What's happening there?" And let them share, "Well, I'm not sure about the money, or I'm not sure about the time, or whatever is there with them." सो हम जो है हम क्वेश्चन उन्हें डायरेक्ट एंड प्रॉपर ही पूछेंगे, जिससे कि वो बता सके कि उनका इंटरेस्ट लेवल कहाँ पर है। हम ये नहीं पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, उससे वो बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन से उनका ये जवाब हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम, कि मेरे पास शायद टाइम नहीं है या पैसे नहीं है, या लाइक यू नो कोई ना कोई अदर ऑब्जेक्शन आ जाती है। बट हम एक जो क्वेश्चंस हैं, हम कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। So I'll share, like when I first started, I saw the presentation, I saw the opportunity. I was really excited, but I owned 8 businesses at that time. I was the franchise owner in New Zealand. And I was like, this is great, but I just don't have the time for this, you know? And the guy was like, yeah, totally get it. You're an entrepreneur, you're super busy, but this product is amazing. It would be a good fit in your business. Let's get started. So he got my hesitation. He said, I totally understand what you're thinking. It's a good fit. Let's get started anyway. And I was like, okay. And that was it. So he got my hesitation, he answered the objection, and then he asked me again. But let's get started today. जब इन्होंने शुरू किया यूसाना का बिजनेस, इन्होंने प्रेजेंटेशन देखी, इन्होंने बोला पर मेरे तो ऑलरेडी 7 बिजनेसेस हैं, मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास टाइम है। जिन्होंने इनकी प्रेजेंटेशन की थी उन्होंने बोला कि ओके, मैं देख सकता हूँ कि आप
एंटरप्रेन्योर हो, आप इतने बिजी हो, पर ये जो प्रोडक्ट है ये आपके बिजनेस में बिल्कुल ठीक फिट आएगा, एंड उसकी वजह से क्यों ना हम आज शुरू करें। एंड देन उन्होंने साइन अप कर लिया। सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने जो इनका जो कंसर्न था उसको वैलिडेट किया, और वैलिडेट करने के बाद फिर से यही पूछा कि क्यों ना हम आज शुरू कर लें। सो वो So, क्वेश्चन पूछने की वजह से इन्होंने ज्वाइन किया। and the reason why this is so important is because most people are not decision makers. They hate making decisions. And so if you ask them what they think or how they feel or whatever, they're going to go into all that. What they need is someone to help them actually make a decision. I think the stats like 4% of the whole population are what they call gunslingers, those are people that when they see something, they just go yes. The other 96% of the population, they find it very hard to actually say, yes, let's get started. So if it has to come from them, it's probably not happening. They'll try to buy time. They'll say, let's talk tomorrow, call me next Monday, all that stuff. So you have to actually lead them and say, let's get you started. So it's kind of a question, but it's also taking someone by the hand and saying, follow me. Let's go. If you think about this, if somebody wants to dance, but they're afraid to dance, they're literally waiting for someone to come over and say, "Would you like to dance?" Then they're like, "Yes," and they want to dance. But if you don't ask them, they'll just sit on the side of the wall and they'll just wait. They just need someone to walk over and say, "Hey, would you like to dance?" And then they're, "Yes, let's go." You done? Okay. So now I forgot, you've said so much. So the point is, people don't want to make a decision. They're afraid to make a decision. It's like someone who wants to dance, but they just don't have the permission. As soon as someone walks over and says, "Will you dance with me?" they're excited to go, but they need someone to lead them. सो द थिंग इज कि जब हम किसी को पूछते हैं कि आप क्या सोचते हो, क्या लगता है, 94 से 96% ऑफ जो लोग हैं वो डिसीजन मेकर नहीं हैं। उसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड एज बिजनेस ओनर्स एंड एज पीपल जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, हमें लीडर की तरह काम करना है, जहाँ पर हम उन्हें वो डिसीजन बनाने में हेल्प करें और उन्हें बोलें आप ये डिसीजन बना लो। क्योंकि सिर्फ 4 या 5% लोग ही हैं वर्ल्ड में जो कि एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी को देख के बोलते हैं यस लेट्स डू दिस, साइन करो, अभी साइन कर लो। बहुत कम आपको भी मिलेंगे बिजनेस में जो कहेंगे कि अभी आज ही चलो शुरू करें। सो हमें एज पीपल जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, उनको ये चीज़ में हेल्प करनी है सो दैट वो एक अच्छा डिसीजन तभी बना सकें। क्योंकि अगर हमने उनके ऊपर छोड़ दिया, ये आपने ज़रूर याद रखना है कि 96% लोग डिसीजन नहीं बनाते, उन्हें बहुत टाइम लगता है किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए। तो अगर हम उनके ऊपर छोड़ेंगे ये तो फिर ना ही के बराबर है और ना ही वापस आने वाली है, क्योंकि उन्हें लगेगा वो कंफ्यूजन में चल जाएंगे कि मे बी यार चलो बाद में देखते हैं, लाइक यू नो। सो हमें उन्हें लीड करना है कि चलो अभी करते हैं, अभी लाइक यू नो शुरू करते हैं, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। सो दैट्स हाउ वी गेट देम स्टार्टेड। Great. Now, the best way to tap into people's emotion, like we said earlier, right? People buy on emotion. They don't buy on logic. They don't buy on facts. They buy because they're emotionally excited. And the way that you get people connected emotionally is through storytelling. So, Deep, do you want to share about this? सो जो लोग हैं जब वो कुछ खरीदते हैं वो इमोशन में आके खरीदते हैं, इमोशन में आके ज्वाइन करते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को। तो ये ज़रूरी है कि हम स्टोरीज बताएं उन्हें, एंड स्टोरीज जो हैं टेस्टिमोनियल्स हैं, जब हम उसके साथ प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हैं, हमारी जो प्रेजेंटेशन है स्टोरी से ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि तब इमोशन के साथ लोग कनेक्ट होते हैं। इन्फॉर्मेशन तो देख ली, पर कनेक्शन कैसे बनेगा? कनेक्शन हमेशा स्टोरी से बनता है, क्योंकि हमें स्टोरीज याद रहती हैं, राइट? एंड वो इमोशन की वजह से ही हम
स्टेप लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है? So you want to tell stories all throughout. Okay, this part's really important. In the beginning, you share your story. What was life like before USANA? What happened when you joined USANA? And what are you most excited about in the future? This is where you share with them your why and the things that are really important to you. And then throughout the presentation, you want to share testimonials. You know, I can share about my dad with prostate cancer, how he overcame that. I can share about William's wife, Regina. She had step three pre-cervical cancer. She took USANA. She had her baby. It was successful in that way. You know, Deep's mom had terrible knee pain. She took the products. It really helped her. We've had people that have had type 2 diabetes. They took our weight loss program. They reversed their diabetes. It changed their life. I had a woman that in Indonesia. She was a Gojek driver. She literally was dirt poor, and within a couple of months, she was a silver director, making more money than she'd ever imagined. These stories, you want them to match the person who's there, but you want to share testimonials throughout. And then at the end, I strongly recommend sharing the story about how you got started. What are the limiting beliefs that you had? I didn't have the money. I felt like I didn't have the time. I didn't know if I could do it, right? So you're actually sharing what your limiting beliefs are because those are the probably the limiting beliefs they have. And then you share how you overcame that limiting belief and then what life is like now so that they feel like, "Oh, I'm like that. Oh, I have that same concern. Oh, he overcame it that way, but he got started anyway and now his life is like this." So that's what people want to hear is they feel like, oh, I'm like that person and they had success. तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है, ये ज़रूरी है कि आप उसमें स्टोरीज यूज़ करें। आप ओपन भी स्टोरी के साथ करेंगे प्रेजेंटेशन, जहाँ पर आप बताएंगे कि यूसाना से पहले आपकी क्या जर्नी थी, यूसाना ज्वाइन करके आपका कैसा रहा है, एंड यूसाना के बाद क्या है लाइफस्टाइल। एंड देन थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन आप टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं। जैसे नेथन अपने फादर का टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर को ओवरकम किया यूसाना के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके। जन जो हमारी फ्रेंड है रेजीना, उसको प्री सर्विक्स स्टेप 3 कैंसर था, एंड उसकी कैसे जो हेल्थ जर्नी है वो क्या थी। एंड देन जो मेरे मॉम हैं, उनको बहुत सिवियर, उनको अर्थराइटिस का भी लाइक थोड़ा सा इशू था, नी पेन बहुत ज़्यादा था, तो वो कैसे ओवरकम किया। एंड देन जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग में आप कोई भी अपनी एक बिलीफ वाली स्टोरी बताएंगे बिजनेस के बारे में, कि आपका बिलीफ कहाँ पर था एंड कैसे आपने उस चीज़ को ओवरकम किया जो आप। Hello? सॉरी गाइस, द इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चली गई यहाँ पर। सो या जो हम क्लोज है वो भी स्टोरी के साथ ही करेंगे। Okay. Can you hear me? या Okay. Okay, so let's we'll end this with some questions, okay? So these are actionable things. So again, we'll give you these presentations so that you can practice these. But this is the type of thing that you want to be asking people, right? So if I say, VJ, do you see how this business can help you spend more time with your family? Don't tell them, "Hey, this business is going to help you spend more time with your family." Because remember this, if you say it, people think that you're trying to lie to them. They think that you're trying to manipulate them, right? They know that if they buy something, you make money. So whatever you say, they're not going to believe you, right? So you have to ask questions that they are answering for themselves.
आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसकी वजह से वो कन्विंस हो जाए अपने आप से, रादर देन कि आप उन्हें कन्विंस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उससे क्या होगा, उन्हें ये लगेगा कि आप जो कुछ भी बता रहे हैं वो सब झूठ है। सो जो क्वेश्चंस है वो ओपन एंडेड होने चाहिए, मतलब कि हाँ या ना के जवाब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो ये बिजनेस है ये आपको लगता है कि कैसे ये आपको आपकी फैमिली के साथ टाइम ज्यादा देने में हेल्प करेगा, एंड देन उन्हें आंसर करने दीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये लगेगा कि ये उनका आइडिया है, कि उन्हें जो है आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, कन्विंस नहीं कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में जब आंसर देंगे तो उन्हें पता चलेगा कि या ये एक्चुअली अच्छा आइडिया है, ये मुझे करने में बेनिफिशियल है। Yeah, so if I say, Jagdeep, why would you want a second stream of income? Right? Now he's telling me all the reasons why he thinks this is a good idea. Right? It's not me trying to do anything. He's telling me. If you were to get started today, let me just ask you a question hypothetically. If you were to get started today, would you want to make a lot of money or would you want to just make a little bit of money? Let them tell you, right? If you got started today, would you want to do this part-time or would you want to do this full-time? They'll tell you, right? Actually, I'm not working at the moment. I'd love to be able to do something full time. This also tells you what you need to know when you're getting to the point of making a decision. जब वो डिसीजन बनाने के पॉइंट पे जाते हैं, आप ये जो क्वेश्चन है उन्हें पूछिए, एंड ये हम प्रेजेंटेशन है जो आपको दे देंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड उससे क्या होगा कि आपको मौका मिलेगा ये जानने का कि उनके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। Okay, so let's go over these closing scripts. So, like again, this may sound simple, but this is what works, right? Do you want to make more money? Yes. Do you see how USANA can help you make more money? Yes, I do. Okay, great. When would you like to start making more money? Now. Okay, great. Let's get you started. ये जो सिक्स फिगर क्लोज है ये बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, पर ये हमें ऐसे ही पूछने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोस्पेक्ट बिजनेस की बात कर रहा है तो आप उन्हें पूछिए, क्या आप ज़्यादा मनी, लाइक जितनी आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमाना चाहेंगे? अगर आप उससे ज़्यादा कमाना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि युसाना के साथ आप ये कर सकते हैं? एंड अगर आपको लगता है कि आप युसाना के साथ ये कर सकते हैं, आप कब शुरू करना चाहेंगे? तो अगर वो कहें हम अभी कर सकते हैं, देन से ग्रेट, लेट्स गेट यू स्टार्टेड। Yeah, and by the way, we learned these from Simon Chan, three-star diamond director. For those of you who are on his last presentation, and Deep is actually working with Simon one-on-one right now, and we're looking at creating a mentor program with Simon for the people that are in our STI team. But he taught us this very simple process, right? It's very, very powerful and it's very easy. And sorry, you want to translate that, Deep? हम अभी साइमन चैन के साथ काम कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी हमें उनके साथ उनसे ही मिले हैं। जो मैं एक्चुअली साइमन चैन के साथ मेंटरिंग भी ले रही हूँ, थ्री स्टार डायमंड डायरेक्टर है, वन ऑफ द टॉप ट्रेनर्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माने जाते हैं। सो उनके साथ हम मेंटरशिप का प्रोग्राम भी देख रहे हैं। So these questions also work for products as well, right? So this is money. Do you want to make more money? Do you see how USANA can help you make more money? When would you like to start making more money? Now. Okay, great. Let's get you started. Would you like the 35-point pack or the 100-point pack? Right? Very simple. But it also works with products, right? Would you like to lose weight? Yes, I would. Do you see how these shakes and the Hepasil can help you lose weight? Yes, I do. When would you like to start losing weight? Today. Okay, great. Let's get you started. Here's the products that work for weight loss, right? Or would you like more energy? Yes.
Do you see how these products can help you have more energy? Yes. When would you like to start feeling more vibrant and more energetic? As soon as possible. Okay, great. Here's the product that works for you, right? Or maybe someone's really into travel, right? Do you like to travel? Yes, I do. Where do you like to travel? Blah, 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 blah. Great. Do you see how, based on the amazing incentive programs that we have, that USANA can help you travel around the world? Yes. I would, that looks amazing. Great. When would you like to start traveling with USANA? As soon as possible. Okay, great. Let's get you started. तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये जो फॉर्मूला है, ये सेम ही है, हम किसी भी उसमें इसको फिट करके पूछ सकते हैं, चाहे किसी के वेट लॉस का क्वेश्चन है, चाहे वो एनर्जी के बारे में है, चाहे वो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी के बारे में है। हम उन्हें ये सेम उसमें कैटेगरी में सेम तरीके से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रैवल क्या है, हम पूछ सकते हैं कि आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, आप क्या आप करना चाहेंगे, एंड क्या आपको लगता है कि यूसाना के साथ आप कर सकते हैं, हमारे पास जो इंसेंटिव्स हैं उसके साथ आपको लगता है कि आपको मौका मिलेगा और भी ट्रैवल करने का, एंड आप कब शुरू करना चाहेंगे, एंड देन लेट देम आंसर। Yeah. And by the way, this takes time. You just have to keep practicing and then it'll just become very natural. Once asking these questions becomes natural, you have now $1 million skills, right? It just becomes a very easy process that you go through with people. Okay, सो so ये, let's go ahead, Deep. नो दैट्स ओके, गो। So we've kind of gone over this, but this is one that I use a lot. Okay. So when you're trying to figure out where people are at, hey, Rajesh, do you see how USANA can help you in your life? Yeah. Okay, great. Let's get you started. Well, let's say I feel a little hesitation. Actually, hold on. Let me just ask you a question, Rajesh. Hypothetically speaking, on a scale of 1 to 10, right? Where are you? 1 being like no interest, 10, you see this as like an incredible opportunity. You want to get started right now. It's amazing, right? And they say, "Well, I'm a 7." Okay, great. Right? How do you're at a 7. What are the concerns that you have to that I can help you address to get you to be a 10? This is very powerful because it's all coming from them, right? You're making it very safe and easy for them to answer simple questions, but it gives you the information that you need to help them make that decision. तो 1 to 10 स्केल का जो क्लोजिंग है वो भी हम कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स के साथ। हम उन्हें पूछ सकते हैं प्रेजेंटेशन के बाद कि 1 to 10 पे आपका इंटरेस्ट कौन से लेवल पे है, अगर हम 1 से 10 में से गिने। और अगर वो बोलें कि हमारा 7 पर है, तो आप बोलेंगे ग्रेट, सो हम क्या आपको इंफॉर्मेशन दें, क्या आपके क्वेश्चन हैं जिसकी वजह से 7 है, एंड हम उसको 10 पे लेके जाएं। एंड अगर उनके कोई क्वेश्चन हैं, देन वी आंसर दैट एंड बोले कि अगर आपके कोई और कंसर्न नहीं है तो आप आज शुरू करना चाहेंगे। सो लाइक एक्चुअली में उनको हेल्प करें इस चीज में। And then the last one, these two I would say are a little bit more advanced, but they're also included in these. But the other one is the dream close, right? So you ask people, not what did you think about the presentation? What did you like best? Get them to share. Okay, great. Do you feel, if you were to get started today, again, hypothetically speaking, if you were to get started today, would you like to make a lot of money or, a little money? I would like to make a lot of money. Okay, awesome. What would you do with that money? They'll tell you X, Y, and Z. Let me ask you another question. This one's a little bit more sensitive, but it's powerful. How long have are you working right now? Yes. What are you doing? I'm an accountant. Okay, cool. How long have you been an accountant? 15 years. Okay. And have you gotten to whatever they said that they like? Have you gotten to travel a lot? No. Oh, okay. Well, it's been 15 years. Do you think that being an accountant is going to help you travel in the future? No. Okay. Well, what if I could show you a way to that part-time you could earn enough money to qualify for an incentive trip to go to
the Maldives this year, right? So working with people's dreams and having them see, okay, for most people, what they're already doing, it hasn't gotten them what they wanted, and it's been a long time. So if this hasn't got them there, what if I could show you a way to get the thing that you want working part-time or full-time, in the network marketing or with USANA, right? This one is very, very powerful. It's just a series of questions. जो ड्रीम क्लोज है वो बहुत ही अच्छा टेक्निक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि लोग अपने ड्रीम के साथ कनेक्ट होते हैं। तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड यू लाइक, बच्चा आपको सबसे ज्यादा क्या चीज़ है जो प्रेजेंटेशन में अच्छी लगी। अगर वो बोलें कि मुझे इंसेंटिव्स वगैरह, ट्रैवल अच्छा लगा, या आप उन्हें ये भी पूछ सकते हैं आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं या कम। अगर वो बोलें इतने पैसे कमाने हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि आप क्या करेंगे। अगर वो बोलें कि ट्रैवल करूंगा मैं, तो आप पूछ सकते हैं कि करंट जॉब जो आपकी है, करंट काम जो आप कर रहे हो उसके साथ आप कर सकते हो। अगर बोले नहीं, देन आप उनको पूछ सकते हो कि आपको लगता है कि यूसाना के साथ जो इंसेंटिव, अगर हम आपको दिखा दें कि कैसे आप ट्रैवल कर पाओगे इस साल, जो हमारा इंसेंटिव ट्रिप है जैसे उसमें, तो क्या आप शुरू करना चाहोगे। एंड देन आस्क देम फॉर पेमेंट, एंड वो खुद ही आपको बता देंगे कि हाँ चलो शुरू करते हैं। ओके। Okay, I think that's a good way to end deep. Next time, we're calling these Super Success Saturdays, right? And I want to focus on really focusing on sales skills. So next time we can go over objection handling. But if anybody has सो any questions, we can go over them. ये जितनी भी ट्रेनिंग्स है हम सैटरडेज पे किया करेंगे, इनको सुपर सक्सेस सैटरडेज बोलेंगे। एंड अगर किसी नेक्स्ट जो हमारी ट्रेनिंग है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर होगी। एंड अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क, एंड हम आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे। Shashank was like, he wants the presentation. Other than that, there are no questions. Neeraj is like, he wants to know the science of USANA and technology about the products and stuff. Hmm. They do So that's a presentations. different thing, Neeraj sir. वो दूसरी presentation है। आ, आज की ट्रेनिंग है। सो हमारा जो YouTube का चैनल है वो मैं इसमें डाल